Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, welcome back to your online EVS class. Students, in previous videos we had completed lesson 3rd, the family. Okay, then tell me, have you completed all work in EVS book and notebook also? Question answers and exercise of lesson 3rd? Very good. So, today in this video we will start lesson 4. Okay, so take your book and open page number 21. So students, this is your page number 21 and this is your new lesson celebration. Okay, so let's start. We celebrate some special days. We celebrate some special days. We do a lot of fun with our friends and relatives. We do a lot of fun with our friends and relatives in those special days. Okay. Like as first one is birthday celebration. Our birthday is a special day. We celebrate it with our family. So students, everyone know na birthday is a special day for everyone. We celebrate it with our family. So students, we celebrate our birthday with our family and friends. We also invite our friends and classmates. In our birthday, we also invite our friends and classmates. We arrange a party. The birthday child cuts the cake. If the birthday child cuts the cake and candle and party begins. We enjoy the cake and nice snacks. We sing and dance. We enjoy the fun. So students, जब आपका बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो? केक कट करते हो और इन्जॉय करते हो, है ना? सिंगिंग, डांसिंग, लॉट्स ऑफ फन ना. सो आवर बर्थडे इज अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन ना. सो we celebrate our birthday with our family and our friends, classmates. Okay. So and in birthday we arrange a party in our home, in hotel. Okay, and cut the cake. Birthday child cuts the cake. Okay, next one, wedding celebration. Wedding celebration, look this picture. It is a family function. Wedding celebration is a family function because it is a family function. So students, everyone know na, wedding celebration is a family function. Many people attend it. There is a big feast. There is singing and dancing. सबको पता है ना, फैमिली मैरिज जो होती है, वेडिंग फंक्शन जो होता है, वेडिंग सेलिब्रेशन एक फैमिली फंक्शन होता है और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं. सो और इसमें हम क्या करते हैं? सिंगिंग, डांसिंग, एंजॉय ना. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट some special days, means celebration. Okay, like this birthday celebration, wedding celebration. Okay, now turn your page. Students, this is your new page number 22. Now here our national festivals. Okay, our national festivals means हमारे जो national festivals हैं. National festivals are celebrated by all the people of a country. National festivals are celebrated by all the people of a country. We celebrate 3 national festivals: Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती. मीन्स नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे बर्थडे होता है तो उसे हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. वेडिंग फंक्शन हम अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स पूरी कंट्री, फुल कंट्री सेलिब्रेट करती है. ओके, मतलब सभी लोग कंट्री में सभी लोग
सेलिब्रेट करते हैं. एंड वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. ओके, सो फर्स्ट वन इज everyone know na, Independence Day means 15 August, Republic Day means 26 January and Gandhi Jayanti means 2nd October. Okay, everyone know. First one, Independence Day. Independence Day is celebrated on 15 August every year. Independence Day कब सेलिब्रेट होता है? एवरी ईयर इन 15 अगस्त. 15 अगस्त को होता है ना, आप जब स्कूल में फंक्शंस रेडी करते हो, डांस प्रोग्राम रेडी करते हो, है ना, तो वो 15 अगस्त. Our Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi on Independence Day. इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट है ना, दिल्ली में रेड फोर्ट, लाल किला, उस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारा नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. और व्हाट इज द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? तिरंगा ना. सो 15 अगस्त को नेशनल दिल्ली में रेड फोर्ट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, लुक दिस पिक्चर. दिस इज रेड फोर्ट. Next one is Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. Republic Day कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी को. ओके, everyone know? Very good. The Republic Day parade take place at the Rajpath in New Delhi. न्यू दिल्ली में राजपथ है, उस पर रिपब्लिक डे में परेड होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड. एंड रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट अपने इंडिया के प्रेसिडेंट उस परेड को सैल्यूट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू ना. ऑन 15 अगस्त आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट. And on 26 January means Republic Day, our President of India takes the salute of the Republic Day parade. Understood all of you? Very good. Next one, Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year. It is the birthday of Mahatma Gandhi. Means students, we remember 2nd October to birth of महात्मा गांधी. मीन्स हम 2nd अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 2nd अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. बिकॉज 2nd अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. सो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर. ओके, महात्मा गांधी इज फॉन्डली कॉल्ड बापू बाय ऑल ऑफ अस. महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? बापू, है ना. महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? बापू. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. और उनका एक और नेम है क्या? फादर ऑफ नेशन. व्हाट? फादर ऑफ द नेशन. ओके, महात्मा गांधी इज फॉन्डली कॉल्ड बापू बाय ऑल ऑफ अस एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन. What is the second name of Mahatma Gandhi? Father of the nation. Okay, understood all of you? Very good. Now come on to next page. This is your next page number. We also celebrate Children's Day and Teachers' Day in our school. No, na? Everyone know? We also celebrate Children's Day and Teachers' Day in our school. And when we celebrate Children's Day? On 14 November and Teachers' Day on 5 September. So Children's Day is celebrated on 14 November. Everyone know? Children's Day is celebrated on 14 November. It is the birthday of Jawaharlal Nehru. He was loved by children dearly. Children lovingly called Jawaharlal Nehru Chacha. मीन्स हम 14 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे. ओके, इट इज़ द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू. और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज
On 14 November, 14 November is the birthday of जवाहरलाल नेहरू. एंड चिल्ड्रन, बच्चे जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? चाचा. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. नेक्स्ट वन, टीचर्स डे. टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 September. It is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Now, we celebrate on 5 September is Teachers Day. Why? Because that day the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great teacher and second president of India. So, students, who was the Sarvepalli Radhakrishnan? So, Sarvepalli Radhakrishnan, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great teacher and second president of India. Okay, children show their love and respect for their children on this day. So, children टीचर्स डे पर अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें. ओके, so students, here we have some celebrations day, means special days like this: birthday celebration, wedding celebration. Okay, and so students, here we have some national festivals. Okay, मतलब national festivals means जो पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है और जिसे हम अपने स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं ना. सो हम अपनी फंक्शंस रेडी करते हैं लाइक दिस: डांसिंग, सिंगिंग. ओके, this one na dramas. So first one is our national festival, Independence Day. Second one, Republic Day. Independence we celebrated on 15 August. Republic Day we celebrated on 26 January. Next one is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti we celebrated on 2nd October. And Gandhi Jayanti हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि गांधी जयंती को मीन्स 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे है? महात्मा गांधी का. ओके, नेक्स्ट वन, चिल्ड्रंस डे. नेक्स्ट वन, चिल्ड्रंस डे. नाउ टेल मी, why are you celebrate Children's Day? Because Children's Day we celebrate on 14 November na, and because it is birthday of Jawaharlal Nehru. Okay, Jawaharlal Nehru को बच्ची क्या कहती थी? चाचा. Next one, Teachers Day. Teachers Day celebrated on 5 September, and it is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Okay, and he was our second president of India. Understood all of you? Very good. Now look here. Here we have some pictures. So this is a picture of our national flag. That name is Tiranga. Next one, it's Rajpath. Third one is Rajghat, means Gandhi's Samadhi. Fourth one, Pandit Jawaharlal Nehru. This is a picture of Pandit Jawaharlal Nehru. And fifth one, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Okay, understood all of you? Very good. Students, today our explanation of lesson 4 celebrations is complete. In next video, we will start our exercise and question answers of this lesson. So, do revision of this lesson, means do revision of explanation of this lesson. Okay, and learn question answers of previous lessons. Okay, understood all of you? Okay, bye. Thank you. Have a nice day.